Hello, dears learner in literature. Good morning. Today we are going to discuss literary figures, and especially in literary figures, simile and metaphors. We already have discussed in literature when we come to figure itself in literature an ornament to make the expression or the lines very decorative, very a simple term. As today we are discussing simile and metaphor. When we come to simile's meaning is comparison, and as a matter of fact, when we try to define, that means in literary we point simile when two things, two unlike things are brought nearer with the as or like, called simile. With as और like, सिमिली की परिभाषा की जब हम बात करें, अर्थ की बात करें, तो हम सिंपल हिंदी में बोलेंगे उपमा अलंकार, जिसमें दो भिन्न वस्तुएं, ध्यान रहे, दो भिन्न वस्तुएं लाइक और एज से कनेक्ट की जाती है, पास लाई जाती है उपमा के लिए, एक वस्तु की, एक व्यक्ति की, एक आर्टिकल की, एक ऑब्जेक्ट की उपमा दूसरे से दी जाती है, और इस पर्पज से लाइक और एज हमारे सिमिली के सीधे टूल्स कहलाएंगे। हम जब बात करेंगे सिमिली की लिटरेरी व्यू में, जब हमारे पास एज और लाइक है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एज और लाइक से हम ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिटरेरी सिमिली और लिटरेरी पर्पज से और एग्जाम पर्पज से सबसे ज्यादा बड़ी बात ध्यान रखने की कि दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर ब्रूट नियरर with the help of age or like. For example, when we try to discuss, when we try to clarify, here simile and grammatical approach with age or like. That means when we say he ran like a deer, he ran like a deer, that means here he is a human and a deer is animal. Both these are unlike. So here in this sentence, it's in literary view similic example. But when we take other sentence and say he is as clever as my friend, that means here he human and a friend human. This sentence is not to be regarded simile, can't be example for the purpose of a simile. That is a very, very important thing. Two different things, articles or objects are brought nearer with the help of like or age.
when same objects, same articles, that is not to be regarded for the example of a simile in literature, that will be regarded grammatical sentence. When we come to the purpose is, जब हम बात करते हैं कि साहित्य में ये जो फिगर्स हैं जिनको अपने आप में ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज, ऑर्नामेंट ऑफ लिटरेचर कहा गया, तो फिर ये आएगा कि इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है। और हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य आएगा टू क्लियर आइडिया, टू ब्रिंग नियर टू नियर द रीडर expressed thought or expressed idea, that is the main purpose. Now सवाल ये आए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। Since the creation of the literature, simile is applied both prose और poetry। प्रोज और पोइट्री में दोनों में सिमिली का प्रयोग थ्रू आउट सिंस द वेरी फर्स्ट डे इन लिटरेरी पर्पज यूज्ड और अप्लाइड। हम बात करें सिमिली के प्रकार की, सिमिली कितने प्रकार की होगी, तो उसमें बेसिक तरीके से यदि हम सिमिली की बात करते हैं, बेसिक रूप से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स। वेरी फर्स्ट, that is a common or ordinary simile. In literary viewpoint, very first common ordinary simile, and the other one interior simile, submerged simile। ये दो प्रकार सिमिली के चलेंगे, लेकिन इसको हम बड़े तरीके से इसका स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ थॉट। तो हमारे पास वेरियस टाइप्स और लगभग लिटरेचर में लगभग 10 प्रकार की सिमिलीज हमारे सामने निकल कर आती है। और वो सिमिलीज जो 10 प्रकार की है, पहले तो हम बात ये करें कि इंटीरियर सिमिली से क्या मतलब है। ऑर्डिनरी सिमिली that runs in literature with like age, it will be an ordinary for the purpose of two unlike objects to clear the idea। लेकिन सेकंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबमर्ज्ड और इंटीरियर सिमिली, that means interior simile means comparison in literature without applying simile tools as or like। अब हम बात करते हैं कि संरचना की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, जब सिमिली के बहुत सारे प्रकार बताए गए तो हम वन बाय वन यदि लिस्टिंग करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आता है ऑर्डिनरी, जिसको हम अल्टरनेटिवली सिंपल बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 नेगेटिव, हम केवल मात्र आपको क्रेमिंग पर्पस, एग्जाम में इंफॉर्मेटिव पर्पस से बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे मेन पर्पस आइदर एनी स्टेटस ऑफ अ कंपटीशन, कंपटीशन का कोई सा भी स्टेटस हो, उसमें मेन इंफॉर्मेटिव, सूचनात्मक तरीके से, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपसे ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहला हमारा टाइप्स ऑफ सिमिलीज में ऑर्डिनरी, सिंपल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड हमारे पास एक्सटेंडेड सिमिली, और नेक्स्ट एपिक जिसे हम होमेरी कहेंगे। अगला आपका कॉमन, पैरोडिक, पैरोडिक अल्टरनेटिवली कॉल्ड आल्सो ह्यूमरस, मेटाफोरिक and conventional, that is alternatively also stock, simile and personifying. These are the similes on the basis of structure and thought in literature applied generally, usually. हम इसी के साथ यदि बात करते हैं मेटाफर, क्योंकि दोनों को both these figures are taken very confusing when we take meaning. Then metaphor का यदि हम मीनिंग लेते हैं, metaphor also comparison, that means really to be confused. तो फिर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कंफ्यूज होना स्वाभाविक है. बट माइनर डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, दो मेटाफर is also comparison, but when two or more than two unlike objects or things are brought nearer for the purpose of comparison, but one quality is directly transferred into another. As a definition, try to understand and try to go, having the minor difference between simile and metaphor. There, simile, comparison, two unlike things are brought nearer with the help of tools, as or like. It's not so here in metaphor. In metaphor, one quality is transferred into another without using like or age. That is the basic or the minor difference between simile or metaphor. When we come to define or come to take the examples, for example, a general example, we generally say camel is the ship of a desert. In literary view, metaphor is the glorification. Metaphor is the transferred qualification of that thing. As here, जैसे कि यहाँ हम मानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को हम ऑपरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो स्पष्ट है केमल लिविंग बीइंग एंड शिप नॉन लिविंग बीइंग. When we say camel is the ship of a desert, that means not a translating purpose. The essence, sense, purpose, meaning, purpose here in literary point, the speaker means camel runs fast in desert on the sand. That means here metaphor. Metaphor is also used in literature since very first creation of literature and in both prose और पोइट्री. सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये टर्म है और मुझे उम्मीद है कि ये टर्म क्लियर हुआ होगा.
सिमिली और मेटाफर दोनों में यदि हम डिफिनीशन के हिसाब से बात करें तो दोनों में कंपैरिजन यहां तक दोनों समान आएंगे, लेकिन अब डेफिनेशन जब कंप्लीट होती है तो हमारे सिमिली में लाइक और एज वन, सिमिली में अनलाइक टू और मोर देन टू थिंग्स, मेटाफर में भी, लेकिन यह मेटाफर में ये हुआ कि वन क्वालिटी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर एंड applied without using of like or as. I think very short, in a nutshell, it will be very helpful for the purpose of any type of exam. See you in next meeting. Thank you.